This is a story about clothing. It's about the clothes we wear, the people who make these clothes, and impact that it's having on our world. It's a story about greed and fear, power and poverty. It's complex as it extends all the way around the world, but it's also simple, revealing just how connected we are to the many hearts and hands behind our clothes. When we think of fashion, the first thing that comes in our minds is how to look different and elegant. And for some people, fashion is about upgrading yourself towards modernness. But due to trends changing in a short span of time, fast fashion takes place. Basically, fast fashion was introduced by retail companies which were providing cheaper version of designer clothing to the masses. So they had to produce in cheaper material, and in order to make the garments cheaper, they had to use polyester and the fabrics which cannot be decomposed easily. So if you talk about the industry, they're creating 80 billion garments per year, which is like 400% more than the garments they were producing 20 years ago, and which is like for 10 garments for each person on the planet. So that is a lot, and that takes around like 1,000 years to decompose one shirt. Definitely it's affecting our environment. Land pollution में एक major part है हमारे fast fashion का, because 85% जो wastage है that is due to textile and fashion clothing, because wastage हाँ बहुत ज़्यादा है. लोग एक दो दफ़ा कपड़े पहन के या तो डोनेट कर देते हैं या वो हमारा गार्बेज में चला जाता है, वेस्टेज में चला जाता है, और वो रीयूज़ नहीं हो सकता, रीसाइकिल नहीं हो सकता. सो दैट कॉजेज़ अ लॉट ऑफ लैंड पोल्यूशन, जो कि हमारी दुनिया के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए विच इज़ नॉट गुड. 1.5 trillion liters of water are used by fashion industry each year, as 200 tons of fresh water are needed to dye even 1 ton of fabric, whereas 750 million people around the world do not even have access to clean water. It takes about 700 gallons of water on average to produce one cotton t-shirt. Along with this, 20% of industrial water pollution comes from textile treatment and dyeing. Wastewater contains toxic substances which are extremely harmful for the aquatic life and the millions of people living by those riverbanks. I was sorting out my cupboard, I think yesterday, and I found like 30 pairs of jeans in my cupboard, and I only wear 3 to 4 pieces generally. अगर one word में हम मुझसे कोई पूछे कि what fast fashion is, तो मुझे यही लगेगा it's a monster in our closets, because हमारे पास इतना कुछ होता है पहनने के लिए, एंड स्टिल हम यही बोल रहे होते हैं कि हमारे पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं है, बिकॉज ट्रेंड्स और फैशन इतने रैपिडली चेंज हो रहे होते हैं. फैशन जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट. सबसे पहले ज़ारा, H&M और इन बहुत सारे और ब्रांड्स हैं जिन्होंने ये फास्ट फैशन जो है वो स्टार्ट किया. जो टीन एज है मोस्टली दे आर इनटू दैट फैशन, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 16 टू लाइक 24 और मे बी लेट 30s. दे आर पिकिंग दैट फास्ट फैशन इन फ्रॉम द मार्केट. So buy good quality products instead of cheaper ones, and instead of running after the trends, you should find comfort, and I think you should be comfortable wearing the clothes, and just think about your comfort and how you can reuse your clothing. Circular fashion is something new which introduced in 2017, and a lot of people are discussing circular fashion right now.
सर्कुलर फैशन में आपका प्रोसेस स्टार्ट ही प्रोडक्शन से होता है कि प्रोडक्शन से ही आप जो है वो नेचुरल फाइबर्स यूज़ करें ताकि हम उसको जब वेस्टेज की तरफ लेके जाएं तो वो रिसाइकल हो सके और सस्टेनेबल फैशन की तरफ हम जा सकें। सो आई गेस हमें इस तरह इन चीज़ों पे ज़रूर काम करना चाहिए, एटलीस्ट बात करनी चाहिए, ताकि जो नई जनरेशन हमारी है, जो न्यू डिज़ाइनर्स हैं, जो न्यू टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स हैं, जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इन नई चीज़ों पे काम कर सकें, वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ फैशन रिसाइकलिंग की पे बात कर सकें और काम स्टार्ट अपना कर सकें। थैंक यू।